very much, Dr. Gamatau Bosmatari, for your melodious rendition of the Baisagu Bothora Sofilaibai, Rongzanai Bothora Sofilaibai. Embrace and welcome the onset of Baisagu. Embrace love, embrace joy, embrace healing, embrace the joy and merriment of the New Year celebration, Baisagu. Thank you very much indeed, once again. Next, we have in our midst Honorable Sri Sambit Patraji, the national spokesperson of Bharatiya Janata Party, and also the chairman of India Tourism Development Corporation. Wherever Sir has gone throughout India and abroad, Patra Sir has always focused on the integrity of the idea of India, the national interest of India, and inspired and invoked the youth from our country and from abroad to look at India as the Mahan Bharat. And we are very fortunate for the Y20 talk series here at Kokrajhar. So ladies and gentlemen, let us welcome Sambit Patra sir with a round of applause. Sir. आप सभी को नमस्कार, खुलुमबाई। A very good afternoon to all of you. थोड़ी देर पहले मंत्रमुग्ध होकर हम सब बासुमतारी जी को सेरजा बजाते हुए हम सब सुन रहे थे और मन ही मन में झूम भी रहे थे। असम के इस संस्कृति, बोडो लोगों के इस संस्कृति, उनके संस्कार, उनके इस प्रेम को देखकर मेरा मन बहुत ही आह्लादित है, बहुत आच्छादित है और मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मंच पर उपस्थित बीटीसी के सीईएम, मेरे साथी, जिनको हम सब ने सुना, एक संघर्षरत नेता और जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे आदरणीय प्रमोद बोरो जी को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारा स्वागत किया। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, आसाम के कैबिनेट में मंत्री, इससे पहले मणिपुर राज्य में चुनाव के दौरान जिनके साथ काम करने को मौका मिला और जिनको संगठन की बहुत गहरी समझ है, वैसे आदरणीय अशोक सिंघल जी को बहुत धन्यवाद कि आपने पहली बार, जब मैंने आपसे बात किया था आज से लगभग 20-25 दिन पहले, तो आपने इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, जो Y20 का कार्यक्रम कोकराझार में हो रहा है आज, उसके लिए आपने मुझे पहले आमंत्रित किया था। आप न होते तो मैं भी यहां नहीं होता, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदरता मैं आज देख नहीं पाता, वंचित रह जाता। मंच के समक्ष कई बहुत महत्वपूर्ण लोग मौजूद हैं। मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जितने भी ईएम्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जितने भी एमसीएलएज यहां मौजूद हैं, वो एक बार जरूर खड़े हो और जो दर्शक हैं वो एक बार सारे ईएम और एमसीएलएज के लिए जोरदार अभिनंदन से ताली बजाएं। यहां आज हमारे बीच में मौजूद हैं कातीराम बोरो साहब, जो यहां के स्पीकर हैं, उनका बहुत अभिनंदन। रंजीत जी, अनूप जी, दावबसिया जी, रियो जी, गौतम जी, उकील जी, हमारे एमएलए लॉरेंस साहब, संजीत तंती जी, सजल जी, बिजीत जी, हेमंत राभा जी, दिलीप बोरा जी, एवं कुछ नाम जरूर मेरे से छूट गए होंगे। ऑफ कोर्स हमारे बीच में आज उज्जवल जी हैं, उल्लास कामत जी भी हैं। मैं उल्लास कामत जी को बेंगलुरु से आए हैं, एक जोरदार ताली उनके लिए हो।
क्योंकि आज सब कुछ जो गतिविधि हो रही है वो कर्नाटक में हो रहा है, राजनीतिक गतिविधि। तो उनसे भी हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार की गतिविधि वहां हो रही है और यूथ की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, उनका भी बहुत अभिनंदन। बंधुगण, मेरे से पहले दो महान वक्ताओं ने बहुत स्पष्टता के साथ यहां के विषय को रखा। मैं आपको सही बताऊं तो 2014 से पहले जिन लोगों ने मुझे टीवी पे देखा होगा, मेरा सबसे पहला डिबेट कोकराझार को लेकर था। यह आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उस समय कोकराझार में जो अशांत वातावरण बना हुआ था, उस समय हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले, और कोकराझार को लेकर मुझे याद है टीवी डिबेट्स के एक श्रृंखला चलती थी और मैं पहला डिबेट जो मैंने किया था कोकराझार में फैले अशांति को लेकर मैंने किया था। और आज इस 8 वर्ष के सफर के पश्चात नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के छांव तले आज कोकराझार के जो ये युवक बैठे हैं, ये शांत होकर बैठे हुए हैं और इनका मकसद केवल और केवल विकास है, डेवलपमेंट है, और इनका मंत्र सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास है। यह भारतवर्ष, यह आसाम और यह बोडोलैंड के लिए एक बहुत बड़ा छलांग है। यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह कोई साधारण विषय नहीं है कि आज नॉर्थ ईस्ट, सही मायने में नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, यह हिंदुस्तान का ईशान कोण है। नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। यह मंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यह कोई साधारण विषय नहीं है। बंधुगण, आज से अनेकों वर्ष पूर्ण जब हमारी सरकार नहीं थी तो एनई जब कहा जाता था, एनई का अर्थ उस समय नॉर्थ ईस्ट नहीं होता था। एनई का अर्थ कई राजनीतिक पार्टियों के डिक्शनरी में, शब्दकोश में था नॉन एग्जिस्टेंट। एन माने नॉन एग्जिस्टेंट। द नॉर्थ ईस्ट सिंपली डिड नॉट एग्जिस्ट इन द माइंड एंड द हार्ट्स ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस कंट्री। बट मोदी जी के आने के पश्चात एनई का अर्थ बदल गया। एनई का अर्थ न्यू इंजन ऑफ इंडिया बन गया है, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट मानना है कि यदि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, इफ इंडिया हैज टू ग्रो, इफ इंडिया हैज टू डेवलप, then the new engine of development is the northeast. NE माने न्यू इंजन। मुझे याद है जब कोरोना का काल आया, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टीवी पर आते थे, जब देशवासियों को वो संबोधित करते थे, उस समय जो पटका उनके गले में होता था, जो पटका वो पहन कर आते थे, वो भी नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का लेंग्यान पहन कर आते थे। मैं नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी हूं भारतीय जनता पार्टी का। आज मैं मणिपुर जाता हूं तो मणिपुर के लोग बड़े प्यार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं और कहते हैं, संबित जी आप प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहिएगा। दूर, मणिपुर से दूर, जब वो बनारस में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने इलाके में मां गंगा में डुबकी लगा के स्नान कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने मणिपुर का लेंग्यान पहना हुआ था। उन्हें आप धन्यवाद कहिएगा। ये छोटा विषय नहीं है। सुदूर एक राज्य मणिपुर, उस राज्य के लेंग्यान को, उस राज्य के गमछा को पहन करके पूरे विश्व को समाचार देना, ये नॉर्थ ईस्ट को सेंटर स्टेज में लाकर खड़ा करना होता है। यह महत्व होता है न्यू इंजन का। बिहू की शुभकामनाएं आपको देता हूं। प्रमोद जी ने भी दिया, अशोक जी ने भी दिया। बिहू आसाम का हृदय है, उसका स्पंदन है। और आप सोच के देखिए, इस नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों बिहू के नृत्य पर थिरकते हुए हमारी बहनों के बीच आसाम में मौजूद थे। यह संदेश पूरे विश्व को जाता है कि यस, आई स्टैंड फॉर नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया।
मैं भारत के पूर्वोत्तर के लिए, मैं आसाम के लिए, मैं कोकराझार के लिए मैं खड़ा हूं। यह नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। इसके साथ ही मुझे याद आता है, क्योंकि मैं टीवी पे जाता हूं, डिबेट करता हूं, मुझे याद आता है यह वही आसाम प्रदेश है, यही आसाम प्रदेश है जहां से 10 वर्षों तक मनोनीत प्रधानमंत्री राज्यसभा से मनोनीत होकर रहे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा आसाम से और देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों तक रहे। मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता है कि 2 बार से अधिक वो नॉर्थ ईस्ट आए। केवल और केवल अपने नॉमिनेशन के लिए वो आते थे, वो नॉर्थ ईस्ट नहीं आते थे। पूर्वोत्तर के प्रति कांग्रेस पार्टी का किसी प्रकार का प्रेम नहीं था। और आज गर्व के साथ मैं ऐलान कर सकता हूं और कह सकता हूं कि 8 वर्ष जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दायित्व में आए हैं, आज 60 बार 60 टाइम्स ही हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कहां तो 2 बार और कहां 60 बार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं मैं हिसाब देता हूं, और यह हिसाब है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, नॉर्थ ईस्ट में आने के लिए हिंदुस्तान के कैबिनेट के प्रत्येक मंत्री और कैबिनेट से इतर भी जो मंत्री हैं, सभी को यह निर्देशित किया गया है कि आप सभी को वंस इन अ फोर्टनाइट 2 हफ्तों में 1 बार नॉर्थ ईस्ट आना होगा। और टच एंड गो नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एयरपोर्ट पर उतरे, थोड़ा सा घूमे, 2 बैठक किया और चले गए। यू हैव टू स्पेंड अ नाइट हियर। आपको यहां समय गुजारना पड़ेगा, ताकि जो पूर्वोत्तर के लोगों की दिक्कतें हैं, जो इनकी समस्या है, वो हमारी भी समस्या बने। प्रमोद जी, अशोक भैया, हेमंत जी तो हमारे दादा हैं, आपके तो मित्र हैं, सीएम हैं। मैं बहुत पसंद करता हूं ऐसा एक डायनामिक व्यक्तित्व आज आसाम का और नॉर्थ ईस्ट के लीडर के रूप में भारत में उभर के आए हैं। मुझे याद है हेमंत बिस्वा शर्मा जी का वो इंटरव्यू, जब वो कहते हैं मैं दिल्ली जाकर पड़ा रहता था, मैं चिट्ठी भेजता था, राहुल जी मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे मिलना है। 2 महीने तक कांग्रेस का नेतृत्व हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मंत्री से, जैसे लीडर से मिलते नहीं थे, मिलने से इनकार करते थे। और जब मिलने का समय आया तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के तरफ राहुल गांधी जी ने आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उनका कुत्ता पिड्डी वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसके तरफ उसको बिस्कुट खिलाना, उसके तरफ उनका ध्यान था। ये महत्व हमारे लीडरशिप को, मैं भी भारत के पूर्व से आता हूं, मैं उड़ीसा का लड़का हूं, मैं जगन्नाथ प्रदेश से आता हूं। इसलिए मैं आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो सभ्यता है, आपकी जो सेंसिबिलिटी है, उसे मैं समझ सकता हूं। हेमंत दादा हमारे दादा हैं। हमारे दादा के प्रति इस प्रकार की भावना राहुल गांधी के मन में कि उनको आंख उठा के नहीं देखना और अपने आप में व्यस्त रहना, आज कांग्रेस पार्टी को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। इंडिया हैज चेंज्ड अंडर नरेंद्र मोदी। भारत बदला है। भारत ने नॉर्थ ईस्ट के नेतृत्व को समझा है। नॉर्थ ईस्ट भारत ने पूर्वोत्तर के संस्कृति को, सभ्यता को, उसके इतिहास को समझा है, उसकी महानता को समझा है। लचित बुरपुखन कौन है, इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री दिल्ली तक गए और आज पूरा हिंदुस्तान लचित जी को जानता है। यह है बदलता हुआ हिंदुस्तान। दिस इज न्यू इंडिया, अ चेंजिंग इंडिया। बंधुगण, G20 की अध्यक्षता, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज नॉट अ स्मॉल थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। यह कोई छोटा विषय नहीं है। 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, 20 देशों की शक्ति उसका चालन करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा भारत, और मां भारती का सपूत नरेंद्र मोदी। यह पूरे विश्व के लिए बड़ी बात है। और केवल अध्यक्षता करने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करते। वो जो भी करते हैं दमखम के साथ करते हैं और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। और आज उस पर युवा भी होता है हिंदी में।
ये तो युवा 20 भी है और ये यूथ 20 भी है। युवा माने ऊर्जा, युवा माने एनर्जी, युवा माने चेंज, युवा माने चैलेंज, युवा माने इकोनॉमी। युवा का अर्थ होता है बदलाव। पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में यदि कहीं भी बदलाव हुआ है तो बदलाव युवा के हृदय से निकलता है। यूथ इज द हार्बिंगर ऑफ चेंज एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड। जहां भी बदलाव होता है उसके पीछे युवा होता है। तो युवा माने बदलाव, युवा माने चेंज, युवा माने चैलेंज। अगर किसी के अंदर चुनौती को स्वीकार करके चुनौती के खिलाफ लड़ने का मादा है, if someone has the capability of fighting against challenges, then this capability lies only with the youth of this country. युवा मतलब चेंज, युवा मतलब बदलाव, और युवा मतलब चुनौती, युवा मतलब चैलेंज। युवा मतलब ऊर्जा, युवा मतलब एनर्जी। जहां युवा है वहां एनर्जी है, जहां युवा नहीं है वहां शिथिलता है, वहां ऊर्जा नहीं है, वहां एनर्जी नहीं है। And wherever there is energy, there is economy. There is flow of currency, circulation of economy. यूथ का अर्थ क्या होता है? युवा का अर्थ क्या होता है? युवा का अर्थ होता है जीवन। युवा का अर्थ होता है नौकरी। नौकरी ढूंढने युवा निकलता है। युवा का अर्थ होता है लाइवलीहुड। किस प्रकार से उपार्जन किया जाए, अपने परिवार का ख्याल रखा जाए, वो युवा अपने कंधों पर भार उठाता है। लाइवलीहुड, जॉब, उपार्जन। युवा का अर्थ होता है प्रेम, प्यार करना। ये युवक युवतियां बैठी हुए हैं, ये प्यार करते हैं आपस में। प्यार के पश्चात शादी होती है, मैरिज। युवा मीन्स मैरिज। मैरिज मीन्स होम, घर। मैरिज मीन्स फैमिली, फैमिली, होम, लाइवलीहुड, जॉब। युवा मीन्स क्लोथ, ब्रांड, नए कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, कुर्ता पहनना, पजामा खरीदना। युवा मीन्स वॉच, नए घड़ी खरीदना, नया ब्रांड खरीदना, आईफोन खरीदना। टिम कुक इज हियर इन इंडिया। आईफोन की नई इंडस्ट्री चल पड़ी है इंडिया में। ये आईफोन कौन खरीदता है? हमें तो समझ में नहीं आता। नाती पोते हमारे समझाते हैं, हमारे भाई छोटे समझाते हैं। युवा मीन्स आईफोन, युवा मीन्स मोबाइल, युवा मीन्स लैपटॉप, युवा मीन्स कंप्यूटर। सो एट द एंड ऑफ द डे युवा मीन्स मनी, इकोनॉमी। वो गाना है ना घरौंदा पिक्चर में, मुझे अचानक गाना याद आ गया। पता नहीं कितने लोगों ने 1977 का ये मूवी है और इसमें अमोल पालेकर है। वो उसमें बड़ा प्रसिद्ध गाना है, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। जब वो युवा अकेला होता है, एक अकेला इस शहर में, वो युवा किसी और शहर में जाता है नौकरी करने के लिए। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, रात में और दोपहर में 24 घंटे आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। आबूदाना व्हाट टू ईट, आशियाना वेयर टू लिव। घर ढूंढता है, उपार्जन करने का माध्यम ढूंढता है। एक अकेला एक शहर में। और उसी पिक्चर में, उसी मूवी में थोड़ी देर के बाद अमोल पालेकर को प्यार हो जाता है और गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। तो आप गाने का दूसरा वर्जन देखिएगा, वो एक अकेला हट जाता है। दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में, आशियाना ढूंढते हैं, आबूदाना ढूंढते हैं। दो दीवाने, एक अकेले से दो दीवाने हो गए। When he was एक अकेला, तो गाना का रिदम भी एक अकेला इस शहर में। The rhythm of the song was so lackluster, क्योंकि अकेला अकेला जा रहा था, अकेला अकेला घर ढूंढ रहा था, अकेला अकेला आबूदाना ढूंढ रहा था। मगर युवा है ना, उसको प्यार हो गया। और जैसे ही साथी आ गई, वैसे ही जैसे ही सेरजा बजा उसकी जिंदगी में,
वैसे ही गाने का धुन भी बदल गया। दो दीवाने शहर में, रात में और दोपहर में। उस समय रात और दोपहर नहीं दिखता है, रात भी अच्छी हो जाती है और दोपहर भी अच्छा लगने लगता है। रात में और दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं, आशियाना ढूंढते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। जब दो हो जाते हैं ढूंढ ही लेते हैं। तो दिस इज यूथ। यूथ इज एनर्जी, यूथ इज इकोनॉमी। मैंने बहुत मजाकिया तरीके से कहा क्योंकि आपको समझना होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंट्रीब्यूशन टू दिस ग्रेट कंट्री। यू आर द एनर्जी ऑफ दिस कंट्री, यू आर द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, यू आर द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। आप अर्थ हैं इस देश के। अगर आप ठीक नहीं तो देश ठीक नहीं है। इसलिए Y20 का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को आपको समझना होगा और समझ के जाना होगा। बंधुगण, Y20 क्यों किया जाता है और देश की राजनीति में युवाओं का महत्व क्या होना चाहिए? 4 भाग हैं इसको। मैं सोच रहा था गाड़ी से, जब 3-4 घंटे लगाकर मैं यहां गुवाहाटी से कोकराझार आया तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि क्या बोलूंगा, क्या चैलेंजेस हैं आज के युवाओं की, क्या चुनौतियां हैं। बंधुगण, सबसे पहली चुनौती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, सबसे पहली चुनौती होती है कि सरकार युवाओं को समझे, देश युवा को समझे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने, इस देश की सरकार ने युवाओं को सही मायने में समझा है, समझने का काम किया है और उनके लिए एक नया आयाम खोल के रख दिया है। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो डिजिटल वर्ल्ड हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, हर क्षेत्र को, चाहे वो स्किल इंडिया हो, हर क्षेत्र को नरेंद्र मोदी जी ने यूथ सेंट्रिक बना करके, युवाओं को केंद्र में रख करके दरवाजे खोले हैं, ताकि देश का जो मेरुदंड है, देश का जो स्पाइनल कॉर्ड है, द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, द यूथ आर एंगेज्ड एंड दैट फुली एंगेज्ड गेनफुली एंगेज हो सके स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से। आज आप देखिए यूनिकॉर्न, 107 यूनिकॉर्न, 107 यूनिकॉर्न्स इन इंडिया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हिंदुस्तान के युवक होंगे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के तालों की चाबी, उसको खोलने का चाबी हमारे युवाओं के पास होगा। मुझे लगता है दिस हाउस शुड गिव एन अपलॉज फॉर ऑल दोज हु हैव डन ग्रेट टू दिस कंट्री। जिन युवाओं ने यहां यूनिकॉर्न बनाया, जिन युवाओं ने यहां कंपनी खोली, जिन युवाओं ने यहां पर जॉब सीकर के साथ साथ जॉब गिवर बने, नाउ दे आर जॉब गिवर्स, उनके लिए हमारे मन में सद्भाव होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज अंडरस्टूड द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने देश के युवाओं को समझा है और उनके लिए पथ प्रशस्त किया है, उनके लिए नए आयाम खोले। दूसरा पक्ष होता है युवाओं को मौका कैसे मिले राजनीति, युवाओं को मौका कैसे मिले राजनीति में। अब इस पूरे विषय को चुटकी लेकर मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब परिवार से राजनीति में आया हूं। तो व्हाट वेयर द चैलेंजेस, और यहां जो युवक बैठे हैं वो सोच रहे होंगे, अच्छा ये तो बड़े बड़े नेता आके भाषण देके चले जाएंगे, हमारा क्या होगा? जो चैलेंजेस हमारे हैं उसका क्या होगा, हम कैसे नेता बनेंगे? पहला चैलेंज है, आप देखिए सिंस टाइम इमेमोरियल, जब से मेरी स्मृति है, मेरे मन में मेमोरी है, तब से मैं देखता हूं, चाहे वो हिंदी पिक्चर हो, चाहे वो कोई नाटक हो, चाहे वो किताब हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, सबने पॉलिटिक्स को एक सिनिस्टर बिजनेस के रूप में पोर्ट्रे किया है। पॉलिटिक्स ठीक बात नहीं, अच्छी बात नहीं, ओहो पॉलिटिक्स से तो दूर रहना चाहिए, पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? आप घर में बोलिए इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आपके घर वाले बहुत बढ़िया, बहुत पॉलिटिशियन, अरे क्या पागल हो गया है, पॉलिटिशियन बनना है? ये ऐसा क्यों बोल रहा है पॉलिटिशियन बनना है? कोई बच्चा नहीं बोलता है पॉलिटिशियन बनना है।
हर कोई बोलता है इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, एमबीए सब बनना है, मगर पॉलिटिशियन किसी को नहीं बनना है। और समाज में ऐसी सोच है कि जो कुछ नहीं बन पाया वो पॉलिटिशियन बन जाएगा। क्योंकि वो कुछ नहीं बन पाया, वो सबसे लास्ट बेंच में बैठता था, देखना वही हमारा मंत्री बनेगा, क्योंकि वो तो लास्ट बेंच में बैठता है। ये जो धारणा बनाई गई है, ये जो सोच बनाई गई है पॉलिटिशियंस के लिए इतने वर्षों तक, अशोक जी मैं कहूंगा इस सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लेके आए। आज लोग नरेंद्र मोदी जी को देखकर बोलते हैं मुझे भी मोदी बनना है। मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को सुना है अपनी मां को बोलते हुए मुझे भी मोदी अंकल जैसे बनना है, मुझे भी मोदी बनना है। आई रिमेंबर 2014 में हमारी सरकार नहीं आई थी, मैं टीवी डिबेट्स में जाता था। मैं सर्जन हूं, तो स्वाभाविक रूप से शर्ट पैंट पहनता था, कुर्ते पजामे पहन के हॉस्पिटल नहीं जाता था, तो डिबेट करने भी शर्ट पैंट पहन के जाता था। तो उस समय कई लोग मुझे कहते थे अरे भैया आप याद करिए 2014 से पहले हिंदुस्तान की राजनीति और करप्शन, इन दोनों की शादी हो रखी थी। करप्शन वॉज मैरिड टू इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014। कांग्रेस एंड करप्शन वे सिनोनिमस। इतना बड़ा करप्शन, इतनी बड़ी बड़ी करप्शन के किस्से और कारनामे हो चुके थे कि करप्शन को लेकर नेताओं का नाम बदनाम हो चुका था। कुर्ता पजामा और ये जो जैकेट देखते थे, ऊपर जैकेट जो हमने पहन रखा है, ये देखते ही लोग सोचते थे आ गए करप्ट नेता, आ गए करप्ट नेता, ये जरूर नेता होगा और पैसा मारता होगा। It took a Narendra Modi to change this scenario, to change the thought process of this country, that all those who wear a kurta pajama and a jacket, now this jacket is called as Modi jacket, because he has beautified and he has given a meaning to it. This jacket does not notify, this does not mean corruption, it means development and performance as well. ये बहुत छोटी छोटी चीजें, मगर ये हकीकत है। लोग कुर्ते पजामे से डर गए थे, मैं तो नहीं पहनता था कुर्ता पजामा बिल्कुल ही, मैं कहता मैं सर्जन ही ठीक हूं, मैं शर्ट पैंट में ही आऊंगा। बाद में जब मोदी जी आए तो हमने भी कहा चलो भैया एक हाफ कुर्ता पजामा लाओ, मोदी जी जैसे ही पहनेंगे, क्योंकि लोग इनको प्यार करते हैं, इनसे प्यार करते हैं तो हमसे भी प्यार करने लगेंगे। That is how the change was gradually brought, and this is what leadership is। ये एक चैलेंज है यूथ के लिए कि ये जो प्लॉट बनाया गया है कि पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, यू हैव टू डिबंक दैट, पॉलिटिक्स अच्छा है। इफ गुड पीपल आर नॉट रेडी टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, then remember the good people should be ready to be ruled by the bad ones, they should not complain about it। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को राजनीति के विषय में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अच्छे लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति करें तो अच्छे लोगों को राजनीति में कूदना पड़ेगा और राजनीति में आकर अच्छा बदलाव करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अधिकारी होंगे क्रिटिसाइज करने के लिए और बदलने के लिए। बंधुगण, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, और यह हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चैलेंज है, युवा क्यों नहीं राजनीति में आती है? क्योंकि उनको लगता है मेरे पिताजी तो नेता नहीं है, मेरे पिताजी तो एमपी या एमएलए नहीं है, मेरे पिताजी तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मेरे पिताजी तो इंदिरा गांधी, मेरी माताजी इंदिरा गांधी नहीं है, तो मैं कैसे आऊं राजनीति में? दिस डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाज द नॉर्मल फिनोमिना इन इंडिया। भारतवर्ष में वर्षों तक सबको लगता था कि परिवार से ही नेता निकलेगा। और तो और अशोक जी, मैं थोड़ा छोटा था, इतना छोटा भी नहीं था, थोड़ा छोटा था, तो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें भी छोटी बच्ची को मां नहला रही होती थी, साबुन का एडवर्टाइजमेंट था और उसमें भी गाना बजता था, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। मतलब छोटे छोटे बच्चों को टीवी के एडवर्टाइजमेंट में, साबुन के एडवर्टाइजमेंट में, जहां हुमायूं, जहां बाबर, हुमायूं, अकबर का कोई काम नहीं है। साबुन में क्या काम है? साबुन का कोई काम नहीं है साबुन में, मगर वहां भी गाना था, हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो द पॉलिसी ऑफ डायनास्टिक पॉलिटिक्स वाज इनग्रेन्ड कि भैया वो आप ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं होगा, हुमायूं का बेटा ही अकबर होगा, तुम कहां से पॉलिटिक्स करोगे? तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनादिकाल से यही चला आ रहा है। और उसके बाद
हुमायूं, बाबर, अकबर का तो जमाना खत्म हो गया, मगर नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद इंडिया इज इंदिरा, उसके बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, फिर सोनिया जी के बाद राहुल जी, आगे मुझे नाम याद नहीं है। तो ये पूरा चलता रहा। तो ऑल ऑफ अस थॉट कि सिंस वी आर नॉट गांधीज, हमारे नाम पे तो गांधी नहीं जुड़ा है, तो हम तो राजनीति कर ही नहीं सकते। हमने हाथ खड़े कर दिए। बट इट टुक अ चाय वाला टू चेंज द थॉट प्रोसेस। एक चाय वाला 2014 में आता है और कहता है मैं चाय बेचता था, मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं, क्यों नहीं बनूंगा, ये मेरा अधिकार है। और उस समय कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर खड़े होकर अहंकार से बोलते हैं, अरे चाय वाले तू तो जाके चाय बेच, हमारे टेंट के बाहर तुम्हारे लिए एक दुकान खोल दूंगा, वहां चाय बेच, क्योंकि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मगर थैंक्स टू इंडिया, धन्यवाद है भारतवर्ष को कि एक चाय वाले को भारतवर्ष ने उनके टैलेंट के कारण, उनके प्रतिभा के कारण, जो युवावस्था से लेकर जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक संघर्षरत रहे और आज भी संघर्षरत है, वैसे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम इस भारतवर्ष ने किया। तब युवाओं को लगा कि मैं भी मोदी बन सकता हूं, मैं भी साधारण से साधारण होते हुए भी मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। दिस ड्रीम वाज सोल्ड टू यू, दिस रियलिटी वाज टेकन टू यू बाय नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट इज पॉसिबल, यस वी कैन, इट्स पॉसिबल। आई डोंट नीड द फैन, वो ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, डोंट नीड इट। पसीना आ रहा है, बोलते हुए पसीना आता है। जो लोग यहां पंखा भी घुमा रहे हैं ना ऐसे करके, उनको एक बात बताऊंगा, देयर इज अ वेरी इजी प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दिस। आप सिर्फ मन में सोचिए कि मुझे गर्मी नहीं लग रही, और थोड़ी देर के लिए शांत होकर हाथ को बिल्कुल शांत रखिए, आप देखिएगा आपको गर्मी नहीं लगेगी। आप करके देखिए, आप सोचिए सिर्फ मन में कि गर्मी नहीं है, और आप सोचिए बहुत गर्मी है, मैं तो जी नहीं पाऊंगा, क्या होगा, तो आपका और ऐसे से होगा हाथ। आप सिर्फ सोचिए कि गर्मी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आराम से सांस लीजिए, तेजी तेजी से सांस मत लीजिए, you will not feel the heat, आपको बहुत काम और कूल लगेगा। try to practice this। इसलिए ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें देखना है। तो challenge was dynastic politics। challenge is that in politics there is nothing called as a curriculum and a course, कि ये पढ़ाई करने से मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा। अभी आईआईटी जी के बारे में प्रमोद जी बता रहे थे कि जेईई के लिए यहां उन्होंने एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोला और 34 बच्चे जो एनरोल हुए थे उनमें से 29 आईआईटी के लिए क्वालिफाई कर गए। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मगर वहां एक कोर्स था, वहां एक करिकुलम था, वहां एक ट्रेनिंग थी, वहां एक प्रोफेसर थे, वहां कुछ टीचर्स थे। मगर इस मैदान में, राजनीति के मैदान में, एक अकेला इस शहर में, एक अकेला इस शहर में आपको खुद लड़ना है, आपको खुद संघर्ष करना है। तो आपको लगता है भैया इतना डिफिकल्ट पाथ क्यों लूं, वाई शुड आई चूज दिस डिफिकल्ट पाथ, मैं इस कंटकाकीर्ण पथ पर क्यों चलूं, मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा जहां से कोर्स करके मैं एग्जाम पास होऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, बस। तो एक चैलेंज है डायनास्टिक पॉलिटिक्स का, कोर्स करिकुलम नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन है, कहां से पैसे आएंगे, इन सारे विषयों को चिंता करते हुए हम में से कोई भी राजनीति में नहीं जाना चाहता है। बट रिमेंबर, लाइफ इज अ जर्नी एंड जर्नी इज मोर ब्यूटिफुल देन द डेस्टिनेशन। जीवन एक सफर है और सफर को एंजॉय करना, सफर में आनंदित रहना, यह महत्वपूर्ण है। स्टेशन पर पहुंचने पर वो आनंद नहीं मिलेगा, आनंद तो सफर में है। इसलिए जो संघर्ष आपके राजनीतिक जीवन में है, आज पैसे हैं कल पैसे नहीं है, आज पोस्ट और पावर है कल पोस्ट और पावर नहीं है, संघर्षरत है। इस संघर्ष में जो आनंद है इसको आपको स्वाद चखना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। और अंतिम विषय है, एक तो मैंने आपको कहा कि देश को, युवा को समझना होगा, सरकार को युवा को समझना होगा, युवाओं के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तीसरा विषय है कि युवा इस देश का, देश को कैसे समझता है और कितना समझता है। डज द यूथ अंडरस्टैंड द नेशन, क्या ये युवा देश को समझता है या कुछ ऐसा इकोसिस्टम भी है
जो देश की युवाओं को भटकाने की कोशिश करता है। बंधुगण, उस दिन मेरा दिल बहुत रोया था और मैं ये कह सकता हूं कि जितने लोग यहां आज इस सभागार में, उन सब का दिल रोया होगा जिस दिन एक शैक्षणिक संस्था, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिल्ली में नारे लगे थे, युवाओं द्वारा नारा लगाया गया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस दिन दिल रोया था, उस दिन मेरा दिल रोया था जिस दिन हिंदुस्तान के एक इकोसिस्टम ने कहा था ये बुरहान वानी, ये हेडमास्टर का बेटा है, बेचारे ये पत्थरबाज, और ये बुरहान वानी तो भटके हुए बच्चे हैं, वो भटके हुए बच्चे नहीं हैं। This misconception that has been planted in the minds of the youth of this country by a well thought over ecosystem, we have to get over this thought process. ये जो इकोसिस्टम काम करती है, देश के बाहर भी काम करती है। जब राहुल गांधी जाकर देश के बाहर देश को अपमानित और बदनाम करने का कोशिश करते हैं, जब राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता देश के बाहर जाकर कहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज डेड, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो आपका और मेरा ये कर्तव्य है कि Y20 की मीटिंग में गर्जन के साथ हम कहे, लुक, This is the vibrant democracy of India. ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। आसाम के कोकराझार, सुदूर कोकराझार में बैठ करके आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विषय में G20 में हम बात कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सुंदरता है, ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र है। Let us rebut and reply in a positive manner. बंधुगण, दिल तब भी रोता है जब युवाओं की जो राजनीति का विषय है, उसमें आखिरकार युवाओं का, जो लोग राजनीति में आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम? व्हाट शुड बी द एम ऑफ द बडिंग लीडर्स? जरूरी नहीं है कि आप में से हर कोई एमएलए और एमपी बने। आप डॉक्टर लीडर भी बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअल लीडर भी बन सकते हैं, आप म्यूजिकल लीडर भी बन सकते हैं, आप लोकल लीडर भी बन सकते हैं लोकल काउंसिल में, आप इंटरनेशनल लीडर भी बन सकते हैं WHO यूनिसेफ में नौकरी करते हुए। आप लीडर किसी भी आयाम में बन सकते हैं, मगर आपका एम, आपका उद्देश्य क्या है? छोटा उद्देश्य है या बड़ा उद्देश्य है? डू यू बिलीव इन फ्रीबीज, मुफ्त बिजली पानी? क्या हमें चुनाव मुफ्त और मुफ्त के आधार पर जीतना है, या हमें सैकड़ों वर्ष के हिंदुस्तान के लिए सोचना है कि एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां लॉन्ग टर्म में हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो और हिंदुस्तान मां भारती आत्मनिर्भर हो? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सोचना है। These may be small things, but this is the ethos under which India will move ahead. Do we just want to win an election through freebies, or do we want to have an India which would be Atmanirbhar, which would be self-reliant 100 years from now, 50 years from now? Do we want a post power and a red light car, a red beacon car for ourselves, or do we want a shared future for the generations to come? This is what we have to think. Remember one thing, Yuva and youth does not lie in your age, it lies in your mind. ऐसे भी लीडर हैं हिंदुस्तान में जो अपने आप को युवा नेता कहते हैं, वो युवा नहीं है। और ऐसे भी लीडर हैं हिंदुस्तान में जो 70 के ऊपर तो हो सकते हैं, मगर आज भी यूथ के आइकन है, क्योंकि उनके सोच में नवीनता है, नूतनता है, भारतीयता है, आत्मनिर्भरता है, भारत को आगे बढ़ाने का उनके अंदर मादा है। इसलिए यूथ इज नॉट अ नंबर, यूथ इज अ फिनोमिनन। वो एक सोच है। और आइंस्टाइन का वो जो फेमस फॉर्मूला है E = mc², मैं अंत इसी से करूंगा। E माने एनर्जी, = mc²। m मतलब मास, कितना मास है, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। E = mc², कितना एनर्जी होगा, जितना भारी होगा और जितने स्पीड से वो चलेगा उतनी उसकी एनर्जी होगी। दिस इज आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ एनर्जी। उसके जो थ्योरी है, उसका जो फॉर्मूला है E = mc²। रिमेंबर, Y is also equal to mc²। मैंने शुरू में कहा Y इज एनर्जी,
Y is energy, youth is energy. So youth, that is energy, is equal to mc square. और m और c के अलग अलग मीनिंग है. एक m का मायने है मेहनत और c का मतलब है चुनौती एंड चैलेंज. अगर चुनौती और चैलेंज को डबल स्पीड से, मेहनत के माध्यम से आप डील करें तो आपकी एनर्जी दुगुनी हो जाएगी. यू वुड बी द रियल यूथ ऑफ इंडिया. यू वुड बी द रियल यूथ हु विल बी परफॉर्मिंग. Y इज इक्वल टू mc स्क्वायर. m मीन्स मेहनत एंड c मीन्स चुनौती और चैलेंज. और एक फॉर्मूला भी है y इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर y इज यूथ और m इज मस्ती एंड c इज सिगार्स. मस्ती में धुएं में उड़ाते चला गया, जितने में धुएं में नशा, अल्कोहल, सिगार, ड्रग्स. अगर इसमें मैंने अपने एनर्जी को उड़ाया, डबल स्पीड से एनर्जी खत्म होगी एंड m से मस्ती तो मिलेगा मगर यूथ का एनर्जी नहीं मिलेगा. सो द डिसीजन लाइज विथ यू. y इज इक्वल टू mc स्क्वायर. यू वांट m फॉर मेहनत और m फॉर मस्ती. And you have to choose C for challenge or C for cigars. The choice is yours. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your very, very inspiring words in our midst today, for reminding all of us and bringing to the fore that youth is energy. Youth is joy, youth is a song, youth are the backbone of India. And good youth should be at the forefront of nation building process in India today. Also for bringing in our midst a new formula that will lead to the success of youth in our nation. Youth is equal to mehnat and chunauti and challenge. Y is equal to mc square. Thank you very much once again, sir, for your presence in Kokrajhar, the city of peace. Your presence here today is itself a testimony that we can aspire for better times in our region. Thank you once again. To mark the festive occasion of Baisagu, Rongali Bihu, may I now request the cultural program by Bodoland Cultural Center, Ramphulbill, led by Sri Barlangpa Narzari, to do a presentation. And they will be presenting before us the lively Baisagu performance in the form of a dance. May I invite the cultural troupe to kindly perform on the dais.
Thank you very much to the Bodoland Cultural Center Ramphal for performing the mesmerizing Barde Sikla dance before us. Next, may I request Honorable EM of Bodoland Territorial Region, Sri Sanjit Tanti sir, to kindly propose the vote of thanks. युवा को समर्पित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि यहां उपस्थित आप सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद उठाए होंगे और इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कुछ सीखे भी होंगे। मैं संजीत तांती ईएम बीटीआर आज के शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके वजह से आज का ये कार्यक्रम सफल हो सका है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बीटीआर सरकार की ओर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि असम सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे गुरु स्वरूप आदरणीय श्री अशोक सिंघाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने मूल्यवान समय में से कुछ वक्त हमें देकर इस मंच का शोभा बढ़ाया। महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को हमारे बीटीआर में आयोजित करने के लिए तथा इस कार्यक्रम के चेयरपर्सन हमारे सभी के चहीते आदरणीय बीटीआर प्रधान श्री प्रमोद बोड़ो जी को अंतर्मन से धन्यवाद करता हूं। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण जिनके उपस्थिति से इस कार्यक्रम का शोभा तथा गरिमा सुसज्जित हुआ है, जिनके व्यक्तित्व हमारे दिलों में बसी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय समिति के प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर समित पात्रा जी को मैं आंतरिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। महोदय, आपके वाणी ने युवाओं को बहुत प्रेरित किया है। हम कोशिश करेंगे आपके बताए गए बातों पर हम अमल कर सके। यहां उपस्थित सभी को अपने शब्दों से प्रोत्साहित, प्रेरणा तथा मार्गदर्शन करने के लिए महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित जितने भी विशिष्ट व्यक्ति, मेरे सहयोगी ईएम्स, एमएलएस, बीटीआर के माननीय स्पीकर महोदय और जितने भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से उपस्थित हुए प्यारे विद्यार्थियों और इस कार्यक्रम के आयोजक इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्वप्निल शेरमाली जी, जनरल सेक्रेटरी हीरो ज्योति शर्मा जी, ऑफिस इंचार्ज मिथिंगा ब्रह्मोद जी, सभी को मैं अंतर्मन से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जोंनि मानव गेदेर एग्जीक्यूटिव मेंबर
बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि श्री सन्जित तान्ति सारनिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय बिथाङा भट अफ थेंक्स बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय दा जोंनि गिबि इन'गरेल सेसन जायखौ जोङो 10:30 जानाय लोगो लोगो जागायजेनदोंमोन बियो दासिमाव जोबनानै फैबाय आरो जोंनि नेक्स्ट आयदा दंबावो बियो प्लेनारि सेसन बेखौ जोङो इमिडिएटलि जोङो जागायफिनसिगोन जोंहा बे से घन्टा 30 मिनिटनि सेसन जोबनायनि उनाव सानजौफुनि जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा 1 घन्टा जोङो ब्रेक होनाय जागोन दा बे समसिम जोंनि गुबुन गुबुन स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि इन्स्टिटिउसनफोरनिफ्राय फैनाय जोंनि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोनखौ गावबागाव मासियाव आब्रुथि लाखिनानै जिरायनो खावलायनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंहा दिनै आरोबाव 3 बाजिनिफ्राय जोबनायनि आयदाखौ जोङो आरम्भ जागोन जोंहा गुबुन गुबुन अनुस्थान फसंथानफोरनिफ्राय लिंहरजानाय बिबुंथिगिरिफोर दङ बिथांमोननि बिबुंथिफोरखौ मोजाङै खोनासंनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय आरो जोंनि नेक्स्ट सेसनखौ सालायलांनो थाखाय आंनिनो बिनानाव मिस सानग्रिला बिथांखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय Good afternoon, ladies and gentlemen. Glad to be back here. Once again, welcome back to Y20 Talk Series. This is our plenary session. We will begin our plenary session very shortly. Before we begin and step into our plenary session, let us all have and enjoy a beautiful dance performance by Kokrajhar Anchalik Bihu Hosari Dol, led by Manin Rajbongsi. May I please invite the troops on the stage to present their beautiful performance. मोनसे गुरै खावलायहरनाय जोंहा मासिया लांदां जालांनो हमदों बाहेरायाव जेसेबांखिनि बाहागो लागिरि बिथांमोन दङ फरायसुला फरायसुलि बिनानाव बिथांमोन बयखौबो सिङावहाय फैनानै मासिखौ आवरिनो थाखाय खावलायहरबाय जोंहा थाबैनो प्लेनारि सेसना जागायसिगोन बेनिखायनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय हेलो हेलो एति विशेष अनुरोध যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এবা অংশগ্ৰহণকাৰীসকল বাহিৰত আছে আপোনালোকে অনতিপলমে আমাৰ এই অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত আহিব লাগে আৰু আমাৰ যিখিনি খালী চকী আছে ইয়াত বহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰা হ'ল हमारे बीच आए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग बाहर में है बाहर में बैठा हुआ है या फिर जो भी कर रहे हैं जल्दी ही हमारे ऑडिटोरियम के आगे अंदर में आने के लिए अनुरोध किया जाता है যিসকল আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাহিৰত বহি আছে বা বাহিৰত এনে থিয় হৈ আছে তেখেতসকলক আমাৰ এই অডিটৰিয়ামৰ ভিতৰত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হ'ল
খৰ্গ দেউলালে ঐ বাচ্চৰা মুখলে ঐ দুনিয়াই পাতিছে দোলা ঐ গল জিলিকিছে ঐ মকৰ কুন্দলু ঐ গাতে গম চেলেঙৰ চোলা
ওই কাশিরুয়া তোরা জানো কলা পরিয়াহিব ওই কলা পরিয়াহিব এ আহিনৰ মাহতে আয় ধানৰে ফুটিব ওই ধানৰে ফুটিব ওই কাটিতে কলে পকা কাটিতে কলে পকা দিব ঘৰতে নাই মোৰ ৰোৱনী মইনা নাই আঘোণৰ দাৱনী ঐ মনৰ বৰে ঘৰ আছে খালী হৈ কোনে কৰিব শুৱনি ঐ কথাটি ভাবি গুণি কথাটি ভাবি গুণি চাবি
Thank you, Kokrajhar Anchalik Bihu Husari Dol, for your wonderful performance. We will begin our plenary session by inviting our esteemed dignitaries to kindly occupy their seats on the stage. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage Sri Kokrajhar Brahmo, Honorable Cabinet Minister of Assam, Handloom and Textile and Sericulture, Soil Conservation and Welfare of Bodoland. A noted intellectual, social and a political leader and a Sahitya Academy awardee. A very, very hearty welcome to you, sir. Let's welcome Sri Ulas Kamath, member of the Institute of Chartered Accountant India, member of Institute of Company Secretaries of India and Chairman Karnataka at Federation of India, Chamber of Commerce and Industry, and on board 8 other companies. We also have with us Sri Diganta Bishwa Sharma, Sahitya Academy awardee, devotee of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda and Sri Aurobindo. Ladies and gentlemen, let's have huge round of applause for all of our dignitaries seated here on the dais. First and foremost, we would like to do the honor of felicitating Sri Kokrajhar Brahmo, Honorable Cabinet Minister of Assam. He will be felicitated by Sri Rajiv Dotto, member of Intellectual Forum of Northeast India. Thank you, sir. Thank you very much for gracing us with your presence. Now let us have the honor of felicitating Sri Ulas Kamath, Sahitya Academy awardee, devotee of Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda and Sri Aurobindo. He will be felicitated by Honorable E.M. Arup Kumar De, BTR. I would like to invite Sri Arup Kumar De, Honorable E.M. BTR, to please felicitate Sri Ulas Kamath. He will be felicitated with a bouquet, an aronai and a Bodo musical instrument, Serja. Thank you very much for being here and joining us this afternoon. Now let us do the honor of felicitating Sri Diganta Bishwa Sharma. He will be felicitated by Sri Bibhuti Borgeri, an active social worker. I would like to invite Sri Bibhuti Borgeri to please felicitate Sri Diganta Bishwa Sharma. He will be felicitated with a bouquet and aronai and a Bodo musical instrument, Serja. We are very happy to have you here this afternoon. Thank you for joining us.
Dear friends, moving forward, we have address by chairperson of today's plenary session. For this, I would like to invite Sri Kokrajhar Brahmo, Honorable Cabinet Minister of Assam, to please address the gathering. Ladies and gentlemen, can we have huge round of applause for Sri Kokrajhar Brahmo. Namaskar. Honorable Sri Ullas Kamat, Joint Managing Director of Y20 Laboratories, and one of the key speakers of this plenary session. Honorable Diganta Vishwa Sharma, one of the leading intellectuals of the state and devotee of Sri Aurobindo, Member General Council, Executive Board, Sahitya Academy, and one of the speakers of this plenary session, and all the participants of this Y20 get together here at the cultural complex of the Woodland Territorial Council, Kokrajhar. So first of all, I convey my best wishes to all participants who have come here to share this Y20 summit, the local level summit at the Kokrajhar. The organizers, they have let us know that this kind of meetings will be organized at various places of the Assam. Basically, Kokrajhar, Guwahati, Dibrugarh, and other places of the states are being selected in the next days to come. So this will be very useful series of discussion and talks about India. अभी इनॉग्रेल सेशन हमने सुना, संबित पात्र जैसे एक नेशनल लीडर वो आके अपने भाषण देके गया, और अशोक सिंघाल जी वो भी आसाम के कैबिनेट मिनिस्टर है और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी अपने भाषण रख के गया। तो इसमें एक थीम रखा गया है, यूथ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, और इस समय ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट एंड नेसेसरी डिस्कशंस बोलना होगा, क्योंकि भारत देश ऐसे देश है जो पहले इस देश को बैकवर्ड देश के या अंडर डेवलप्ड देश के नाम पे जाना जाता था, लेकिन ये देश अभी एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है और भारत एक आदर्श बनता जा रहा है कि सारी दुनिया भारत को फॉलो करने लगा। तो इसीलिए हमारा जिम्मेदारी बनता है जो उभरते आए यूथ्स होता है उनको काबिल बनाना, हर क्षेत्र में साइंस टेक्नोलॉजी से लेके बिजनेस, एग्रीकल्चर, एवरीथिंग, हम अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करें और ग्रोथ के कंसेप्ट लेके अपने आप को कैसे डेवलप करें या देश को कैसे डेवलप करें, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी बनता है देश के लिए। और हर यूथ्स को काबिल और जिम्मेदारी यूथ्स बनाना एक देश के लिए कर्तव्य बनता है। तो G20 का समिट हुआ था, इसमें गुवाहाटी में देखा, तो इसमें बहुत सारे मुद्दा आया है बात में, डिस्कशन में। सो रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, रिगार्डिंग द एनर्जी, रिगार्डिंग व्हाट ह्यूमन रिसोर्सेस, एजुकेशन, अदर थिंग्स। जैसे कि भारत में कभी पहले हम एक कल्याण कमी राष्ट्र बोल के लोगों को स्टार्वेशन से मुक्त कराना,
हंगर से मुक्त कराना मेन मुद्दा होता था। और इसके अलावा हम नहीं सोचते थे, क्योंकि गांव में सड़क बनाना, गांव में बिजली देना पहले भारत में एक एजेंडा नहीं हुआ करता थे, क्योंकि लोगों को उस हालत से निकल के लाना है जो नो इंडिया डाइज आउट ऑफ स्टार्वेशन, वही मुद्दा था। लेकिन यहां से हम निकल चुके हैं। अभी निकल के क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्टेज में आ गया। और अभी देख क्या है, हमको दुनिया को रास्ता दिखाना है। और भारत का जो सोच विचार है, इकोलॉजी, नेचर, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब को लेके भारत का जो फिलॉसफी, इसको दुनिया अभी फॉलो करने लगा। तो इस समय इसलिए हमारे जो युवा हैं, यूथ्स है, इसको काबिल बनाना, जिम्मेदारी बनाना, ये हमारा फर्स्ट बनता है। Y20 का मकसद मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिक्स को ठीक तरह से लेके जाना है, वाइब्रेंसी के साथ साथ एक क्वालिटी और वैल्यू बेस्ड डेमोक्रेसी हमको कैसे मिला के लेके जाना है, गुड गवर्नेंस के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी कैसे लाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देश बनाने के लिए हमारे माइंडसेट को अंदर से कैसे तैयार करना है, और साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाने के साथ साथ हम अपने प्रकृति और नेचर को कैसे बरकरार रख के आगे चलना है। इस सब में थोड़ा सा बैलेंस थॉट हमको डेवलप करना चाहिए। और शेयरिंग द नॉलेज, इट इज़ द बेस्ट वे। तो हमको अगर दुनिया में सबसे पहले रह के एक आदर्श बन के जाना है, तो हम दुनिया को जानना चाहिए, दुनिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द, आई थिंक, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस Y20, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सो with this motto, I think this talk series will be most successful, influential and useful for the upcoming youths of this country. And with this hope, as a chairperson of this plenary session, I conclude my short speech. Thank you. Thank you, Shri Kokrajhar Brahma, Honorable Cabinet Minister of Assam. Thank you very much for keeping your valuable words in front of the gathering. Moving forward, I would like to do the honor of inviting Shri Ulas Kamat to keep his valuable words. Can we have a huge round of applause for Shri Ulas Kamat? Kulumboy, thank you, Lokesh, for telling me how to pronounce Kulumboy. I'm coming from Bangalore, and from Bangalore, Kokrajhar is too far in our thinking also, in our understanding also. And we have seen many people from Northeast in South India, but it's the first time I'm coming to Kokrajhar. I've come many times to Guwahati, but it's the first time I'm coming to Kokrajhar. And I must thank Ashok Singhal ji, Pramod ji, for inviting me to talk to the youth. Before I start, I should offer my respect to Board of our leader, Upendranath Brahma, who has put everything behind making this Bodo land so nice, so vibrant, and seeing the students in this hot summer without air conditioning, finding their own way of cooling themselves, makes me to feel that you are wonderful people, you are wonderful kids. And I must thank the students and their parents and the teacher with such kind of a discipline, sitting quietly from 10 o'clock onwards
and I'll guarantee you that I'll speak only for 10 minutes because 2 o'clock is the lunch time and people should have their lunch on time every time. So Ashok ji has spoken a lot about the country. Sambit Patra ji has spoken plenty of the situations, what was, what is, and what's going to be. And my respect to the dignitaries on the dais. I must tell you that the people who are born after year 2000, they are the luckiest people in Indian history forever. The children who are born after year 2000, because when they get into the jobs at 20, 22 or 23 or 25, the opportunities are plenty. So I must say that all of you are born around that time. It is something you are very, very lucky in the Indian history because of what we call as a positive tailwind. In the aeroplane, if the tailwind is positive, it goes faster, and we also call it as a high tide. When during the high tide, all the ships will come up, and this is the time in which we are representing. For youth, my message is you need to have decent education, you need to have decent dream, and you need to dream big, and you need to work towards that. While listening to the people make you to do something big in your life, but really working towards that makes the difference between the winner and the loser. And you need to have that focus in your mind, what you want to do, and you need to think, how do I go about it? It is not that you need to come first in class. It is not that you need to be sitting last in class. As long as you learn something, you have some knowledge, and you have some wisdom, you have some common sense, and you explore the possibility of what is good for you, you pursue that. And in life, I do not believe in option B. In life, for me, only option A, and other than option A, there is no option. Because if you have option B, you settle down with option B. If you have option C, then you will settle down in option C. I'll give an example. Children, you feel that I'll work very hard. If I get good marks, I will go for engineering. If I don't get so good marks, I'll go for graduation in science. If I don't get that much, then I start working. So there's no goal for that. If people want to go for IIT, and Pramodji was telling in the morning that 34 people prepared for IIT JEE exam and 29 people have passed out of that. It is a national record according to me. It is a national record. That kind of a percentage, they should be given the award. They should be standing here. We should thank them. And they are the role models for them. The 29 people who have gone through the coaching of IIT and they have passed the exam of JEE and they're getting into IIT, they are the role models for the kids here. And next time, you should make them to stand here. After seeing the kids, I was thinking in my mind, Pramodji, you give me 1 day's time, I'll bring my entire team from Bangalore and we'll talk to all of them for 1 full day when the AC is on. When the AC is on, you make all these people come back and I'll guarantee you 50% of them I'll convert them as entrepreneurs. 50% of them I'll convert them entrepreneurs in 1 day's time. I'll come here, you tell me whenever you are ready. We come with the 4 teachers, we come with 4 entrepreneurs, some successful people and who have done something big in India, something big in Karnataka, something big in Tamil Nadu, something big in other parts of the country, bring them and make them to become entrepreneur. Because today we need job creators. We need job creators. And I'm not saying that because you have called me here. The most hardworking, sincere, loyal people who will work for an organization comes from the Northeast. Come from the Northeast. The most hardworking, loyal people come from the Northeast. 1997, Ashok ji called us saying that, sir, aap ek factory Guwahati mein dalo.
I said, हमको गुवाहाटी पता भी नहीं है गुवाहाटी किधर है करके. Guwahati for us only Kamakya temple or nothing else. And the first time Ashok ji called us to Guwahati and he showed us a plot to put up a factory of Ujala factory. Now it is almost now 23, 24 years we are in Guwahati. From one factory which he asked us to put up, today we have 5 factories with 3,000 employees, no problems, no worries, and we sit in Bangalore, we sit in Mumbai, everything is managed by local people. So we are extremely happy the way how we have worked in Guwahati in the Northeast, and the case study of Jyoti Labs in Northeast having 5 factories made everybody to come one after other, and entire the credit should go to Ashok ji, who made us to come first time to Guwahati, and thereafter we have come almost 3-4 times a year. Why I am saying this? If you see the past, people will look for the opportunity and go behind the opportunity. I'm talking about 70s, 80s, 90s. People, hardworking people from Kerala, they went towards the Middle East, Dubai, Abu Dhabi, or you are going towards Saudi, Muscat. The people from Kerala, all youngsters, youth went towards the Middle East. When jobs were not available, they started going towards the Middle East. Similar time, the youth from the Tamil Nadu, they started moving towards Singapore, Malaysia, Thailand in search of the job. And most of the people who went there were hardworking people. They built the buildings, what you see in Dubai, what you see in Sharjah, what you see in Abu Dhabi, what you see in Saudi. Every building is built by South Indians, and they have their touch in this building. Similarly, what is built in Singapore, Malaysia, or Thailand, there are people who have gone from South India, and they are extremely happy now. The people went there as a contractor, then worker, then became a contractor, now they have become a builder. The people who went there as a job in a contractor's place, they become a contractor, now the builders, and big people have become very, very rich people there. But if you see the route, when did they come? 40 years back, 50 years come. How you came? I came as a worker. Because of the loyalty, because of the hard work, because of the smartness, because of the knowledge, they built their empire there. And today in Middle East, we have estimated 80 lakh Keralites only in Middle East. 80 lakh. That's almost 1/3 of the population of that region. The people who had a lot of knowledge started going towards United Kingdom, started going towards America. That's what we call as a brain drain. That is 70s, 80s, they've done a PhD here, they've done the medicine here, they've done engineering here, there's no job, there's no scope, and somebody says that come to America and go to America, settle on in America, and now families are settled in America, or in United Kingdom, or Australia. So the people with the knowledge migrated towards the better developed countries. Why? India was called, when we were writing exams, India was classified as a poor country. We were to write as India as a poor country. But when we went for a graduation, we were called as third world countries. Even today, I don't know the definition of third world countries, but from poor countries, they told us as a third world country. Then they told us that we are a developing country. Then they started telling us you are an emerging country. Then they started telling that the future belongs to BRIC countries, that is Brazil, Russia, India, and China. And then they started telling the same India, saying that it is the fastest growing economy. It is the biggest democracy in the world. But truly, after 2014, after our Narendra Modi ji came, I do not belong to any political party. I am a businessman. I am a businessman. I do not belong to any political party. But when we go outside the country, at the immigration point, the immigration officer will say that we like your prime minister. We like your prime minister, whichever the country have gone. When we go into the country, they receive us with pride, with respect, and that is what makes the difference to us as a businessman. When we used to travel in the past, before 1980s, we used to be given $50 per day to stay and to eat, and you need to get it from State Bank of India after getting the license from approval from Reserve Bank of India.
Today, we swipe the card, whichever the country we go, whether State Bank of India card or a MasterCard or a Visa card, or now even the Google Pay works in whichever some of the countries which you have. The country has gone to a different level. Why it is so important? We are as good as country. We are as good as our state. We are as good as our town where we live. And we need to, nobody will come to your house and say that, I will give you a job, come tomorrow. Nobody will come to your house in the morning with a cup of coffee saying that, this is the business I want to set up for you. Never believe in luck. I never believed in luck. There is nothing called luck in this world. There is empty opportunities. Please follow your dreams. The meeting point of your dream and the available opportunity to you is the point called luck. It is the meeting point of the available opportunity with that of the dreams what you have, you encash that, and that's called luck. People say when you become successful, then they say he is very, very lucky. Only the person who has become successful, he knows that how hard he has worked to achieve that. So students, if you come first in class, fantastic. If you come last in class, nothing to worry. And I, for one, I believe that go away from your comfort zone first. As long as you are in a comfort zone, you will not grow. As long as you are in comfort zone, you will not grow. As long as you are in comfort zone, you will never grow. Go out of your comfort zone first, then you know what time to get up, how to make coffee, how to make tea, and what is the value of mother, what is the value of food you will realize when you leave home first. Be on your own. Be on your own, then you know the value of freedom, then you know the value of parents, then you know value for money, then you will not spend the way how you otherwise will have spent. Rule number one. Rule number two, the biggest boon what we have is the technology, and biggest curse what we have is the technology. Biggest boon what we have is everywhere everything is connected, that is the boon. The curse is that data says that age between 14 and 22, they spend 6.5 hours on social media. That is a curse. If you are spending 6.5 hours on a social media, seeing the likes and the dislikes and forwarding and receiving and smiling and crying and getting bored and getting excited, and then people get into depression. If their photo is not like the person by whom they expected you to like your picture, if they do the thumbs down, you get into depression. That is the sad side of the technology. So spend the time only as much as required. Be away from the screen when it is not required. The first screen is the mobile screen, the second is the laptop screen, third one is the TV screen, and the fourth is the multiplex screen. Please be away from the screen when it is not required. And be aware of that and use the technology to get the knowledge. Knowledge is very important, and we are from the country where most of the knowledge and the wisdom you get from your grandparents. Please talk to your grandparents every time. You will never get that kind of a wisdom from any college, any school. You will not get that wisdom what you get from your grandparents. Second, parents want you to be happy in life and call them twice a day. Do not irritate them, and their life they have put in front of the children, and the children, they are educated, they're getting educated, but we don't have time to talk to our parents. Never do that mistake. Please talk to the parents twice a day. If you are not there at the hometown, wherever you are, in the morning, everything is fine. In the evening, everything is fine. And that smile on your face, if you are doing a FaceTime, makes the mother to go to sleep. And please share your good things and not so good things with the mother. It will help you. And from my side, I'll be more than happy to come Kokrajhar as many times as you want. Every month I'll come if you want. And we create the entrepreneurship out of you, and we will make in such a way. In India today, your Startup India, your Stand Up India, money is available. Money is available abundant. But how to take the money? You should carry tools with that.
If you go with a spoon, you get spoonful of money. If you go with a glass, you get one glass full of water. If you go with a bucket, you get a bucket full of water. But you can't go empty hand saying, I want water. No, you can drink. You can only drink, but you can't carry. So you need to have the tools, how much to take, when to take, from where to take. And with that entrepreneurship, not only you will work for yourself, you can create jobs for thousands and thousands of people of your region. One way, as Sambit Patra said, you can become a politician and you can change the policies what is required, which is true, it is required. The other side, you become an entrepreneur, use those policies and create jobs and make the entire region as developed region. And the way how we have seen or heard about Kokrajhar, and the way how I'm seeing here when I was coming down here, it is heaven on the earth. This place is heaven on the earth. But the way how it is projected outside is totally different. So people can come here, people can talk here, and the youth is, as Ashokji said, it is the present. If it is the future, then you become old. So you are the present, and country needs people like you, students like you, who think big and fail early, fail fast, and learn quickly. So that is what it is. Failure is a part and parcel of your life, and you need to fail few times and fail early. There is nothing wrong in failing. And words like, I'm sorry I made a mistake, it is a great word to say. And you need to be failing little, baby steps. You fail, get up and get going. And I have seen in my life, people who come first in the class, not necessarily they have become first in life or best in life. People who have come last in class, most of the times they have become the best in life because they have seen the hardship. So don't go with the marks and the marks and the marks and the marks. Go with the knowledge and the knowledge and the knowledge, and never ever forget the teacher who taught you mathematics and English. Those two things will take you a long way. So do not forget your teachers. Teachers we forget after graduation, and teachers will keep seeing the students, but they are the people who have instilled physics, chemistry, biology, mathematics, English, Hindi, whatever the language what you have learned is all because of the teacher. So don't forget your teachers and meet them once a year and see the joy in their face. Meet your teacher once a year, saying that I was your student, and you can see the bonding which happens. And it's always, we say that Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guru Namah. It is not that we say, but we practice. And I do for the last 50 years. I have met my teachers all the time, and including their birthdays and sometimes, sadly, to their funerals. But there is so much satisfaction when the people call me that your teacher is not well, if you want to see, come and see now. You feel so good about it. And thereafter, when you do well in your life as an entrepreneur, the school which you studied, first rebuild the school. Rest can wait. Rebuild your school and say that this is my school, and I rebuild the school and make your school air-conditioned school. Have that kind of a dream, that I'll make my school as a air-conditioned school. With that, democracy is in your hands. Vote every time when you are entitled. And don't crib, when you don't vote, don't crib about the government. So you need to vote, and you should be the first to vote. At 8 o'clock, you should be there at 7 o'clock, and you should say that I voted first. That's your right, and that can change the fate of everyone. And do not miss to cast your vote, whoever you want, every year. And time management and the discipline. Everyone has only 24 hours. You also have 24 hours. Prime Minister also has 24 hours. You also have 24 hours. But how you make use of that is very important. Do not sleep more than 7 hours, and don't sleep less than 5 hours. Do not sleep more than 7 hours. Don't sleep less than 5 hours. And don't make the difference for students Saturday, Sunday,
I sleep late, I get up late, so Monday you don't work, Tuesday you don't work. So end of the day, you get confused. There is no Saturday, Sunday in sleep pattern. Eat less, work hard, don't party hard. Country has not come to a stage where we can party hard. Country still needs the youth to work 6 days a week and 1 day rest. So please have the discipline and focus your dreams, work towards that. One day you reach there, and anything from my side, more than happy to come. And that's my assurance to Pramod ji. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you, Shri Ulas Kamath, sir, for addressing the gathering so beautifully. Sir has motivated each one of us sitting here within a very short span of time, and it is our absolute pleasure getting to listen from you. We hope to have you again in our future events. Dear friends, now let us enjoy a beautiful dance performance by Even Santali Cultural Group Amguri, led by Srimati Beena Murmu. I'd like to invite the dance troupe on the stage.
Thank you, Ivan Santali Cultural Group, for your beautiful performance. Ladies and gentlemen, this afternoon with us we have Sri Diganta Bishwa Sharma. I would like to do the honor of inviting him. Let us have the pleasure of listening to Sri Diganta Bishwa Sharma. Dear friends, please let us have a huge round of applause. Namaskar. Honorable Chairman of this plenary session, Honorable Kokrajhar Brahmaji, Honorable Minister, Government of Assam, my co-speaker in this plenary session, Sri Ullasji, Honorable Pramod Boruji, CEM, Bodoland Territorial Council, Honorable Ashok Singhal, Honorable Minister, Government of Assam, my friends since 4 decades and more, all the distinguished and esteemed executive members of the Bodoland Territorial Council, esteemed members of the Bodoland Territorial Council, MLCs, and my dear students, friends, youths, and all the cultured soul present here. Let me clarify first one thing. Neither am I a scholar, nor do I possess any scholarship. Then why this audacity on my part? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. Neither am I an original thinker. I have been assigned to talk on youth knowledge and wisdom. But I will be referring to knowledge and wisdom only incidentally. I will be basically and mainly focusing on youth, because everybody is focusing on youth, because it is Y20 summit. But first, let me utter two things, because we are discussing, or this is Y20 summit in the context of G20 presidency. And a couple of days back, I wrote an article in the Assam Tribune where I quoted Sri Aurobindo. Sri Aurobindo uttered 100 years ago that the changes we see in the world today, are intellectual, moral, and physical in their ideal and intention. The spiritual revolution waits for its hour and throws up meanwhile its waves here and there only. So this is not a spiritual world. This is an intellectual world. This is a moral world. This is an ethical world. The second statement, though I have been assigned to talk on knowledge, but the present world is not a knowledge society. Present world is not a knowledge society. Then what it is? Maharishi Sri Aurobindo uttered 100 years ago that this is a commercial age.
This time spirit of this age is not knowledge, not culture, not literature, not art. The time spirit of this age is commerce. This is commercial age. And who are the real rulers of this commercial age? It's not the political rulers. Maharishi uttered 100 years ago, the opulent plutocrat, Vaibhavkhali Dhanapati, the opulent plutocrat, and the successful mammoth capitalist, Otikai Hopal Pujipati, the successful mammoth capitalist, and the organizer of industry are the supermen of the commercial age, and the true, if often occult rulers of this society. আমি যিখন সমাজত বাস কৰিছো এইখন সমাজ বাণিজ্যতান্ত্ৰিক সমাজ আৰু এই সমাজৰ প্ৰকৃত শাসক হ'ল বৈভৱশালী ধনপতি সফল কাম অতিকায়ী পুঁজিপতি আৰু শিল্পপতি This is not a knowledge society. This is not a cultural society. This is not a cultural world. This is not a world committed to art, literature, poetry, culture, and knowledge. This is a commercial age. And next, before I deliver on youth, let me speak 2-3 things. So, we are talking about youth. We are talking about national building. We are talking about youth as energy. But Maharishi, hundreds of years ago, has asked a question. And the people of India, youth of India must know this. Maharishi says, what was the secret of this gigantic intellectuality? What was the secret of the gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata, in the ancient philosophy, in the supreme poetry, arts, sculpture, and architecture of India? What was the secret behind? এই যে ৰামায়ণ মহাভাৰত অতীত ভাৰতবৰ্ষৰ কাব্য সাহিত্য শিল্প সকলোৰে মাজত আমি অভূতপূৰ্ব প্ৰতিভা দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ গোপন ৰহস্যটো কি আছিল আমি সেই গোপন ৰহস্যৰ আমি সন্ধান লাভ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত মই আৰু দুটা কথাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছো নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত cannot build a nation. But Vivekananda can. Rajkumar Siddhartha cannot show the path of light to the world. Only the Gautam Buddha can. So first, we have to become Vivekananda from Narendranath Datta because Narendranath Datta cannot rebuild society, cannot lead the society, but the Vivekananda can. Rajkumar Siddhartha cannot lead the society, but the Gautam Buddha can. And then, let me speak another thing. মোৰ বন্ধু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মহোদয় অশোক সিংঘল মহোদয়ে এটা কথা কৈছিল যে youth is present. He is right. But let me add certain element to this statement. In the light of Maharishi Sri Aurobindo. Definitely youth is present. But Maharishi says, we are children of the past. How he is synthesizing past, present, and the future. We are children of the past, but the possessor of the present. So youth are possessor of the present. But we are creator of the future. And he again says that past is only our foundation. Present is our material. Future is our goal and summit. So the youth of this country must know these two things, that we are creator of the future and our goal is future. Because past is our only foundation, present is our material, future is our goal and summit. We are children of the past, possessor of the present, but the future of the
but the creator of the future. Then Honorable Sambit Patra has uttered one thing, which I have been saying in all my college lectures, that I am not prepared to be a job beggar. I am not prepared to be an employee. I want to be another Jamshedji Tata. I want to be job creator, not job seeker, because I am born not to be a beggar. I am born to be a creator. I am born to be a king. If Jamshedji Tata can become Jamshedji Tata, why not me? But then the question remains, how? মই প্ৰথমতে কৈছো যে মোক ইয়াতে জ্ঞান প্ৰজ্ঞা আৰু যুৱকৰ বিষয়ে ক'বলৈ দিছে মই জ্ঞানৰ বিষয়ে যে মই অলপ কম তাৰ মই এটা পৃষ্ঠভূমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো মই শেষৰ ফালে কম এইখিনি মোৰ যিটো বক্তৃতাৰ মই উপজীব্য হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনি অলপ বিস্ময়কৰ কথা মই ইয়াত প্ৰথমতে উল্লেখ কৰি লৈছো now why we are focusing on youth? Why we are focusing on youth? Why we are focusing on youth? Why youth is so important? Why youth is so important? Sri Aurobindo uttered 100 years ago, which is still a living reality. Which is still a living reality. Why youth is important for us? Because Maharishi says, the future belongs to the young. Future belongs to the young. And it is a young and new world which is under process of development. It is a new and young which is now under process of development, and it is the young who must create it. It is the young who must create it. But Maharishi cautions, but it is also a world of truth. It is also a world of truth, courage, justice, lofty aspiration, and straightforward fulfillment which we seek to create. For the coward, for the self-seeker, for the talker who goes forward at the beginning and afterward leaves his fellow in the lurch, there is no place in the future of this movement. So you have to be courageous. Then Maharishi says, a brave, who is the foundation? Youth is the foundation of nation. But what type of youth we want? Maharishi says, a brave, frank, clear-hearted, courageous and aspiring youth. Aspiring youth, courageous youth, frank youth, clear-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation, on which future nation can be built. On which future nation can be built. But the question remains, who is youth? Whether am I youth, or Honorable Minister Ashok Singhal is youth, or our beloved Honorable Prime Minister is youth. Who is youth? Is youth related to age? Who is youth? Let me quote a shocking statement from the mother. And who is mother? Mother is the spiritual collaborator of Sri Aurobindo, whom we adore as the incarnation of the Supreme Divine Mother. Who is youth? We have been speaking on youth, but who is youth? Who is youth? Mother says a shocking statement. Mother says, I have known all people of 20. Sri Maya কৈছে মই 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ দেখা পাইছো 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ and young of 70 70 বছৰীয়া যুৱক হেনো শ্ৰী মায়ে দেখা পাইছে কিন্তু 20 বছৰীয়া বৃদ্ধ দেখা পাইছে what does it mean তাৰ অৰ্থ হল youth does not depend on the small number of years one has lived. Then on what youth depends? But on the capacity to grow and progress. But on the capacity to grow and progress. This is the key word. Who is youth? Who has the capacity to grow and progress. But what is the meaning of growing? But what is the meaning of growing? The capacity to grow and progress. But what is the meaning of growing? And what is the meaning of progressing? Mother says,
To grow is to increase one's potentialities. To grow is to increase one's potentialities, one's capacity. And what is the meaning of progressing? Because to progress is to make constantly more perfect the capacities that one already possesses. মই মোৰ ভিতৰৰ যি অন্তৰ্নিহিত সামৰ্থ্য সেই সামৰ্থ্য মই I have to continuously increase. But the how? The question is how. So, first, youth is not related to small number of years one has lived, but on the capacity to grow and progress. And what is the meaning of growing? Growing is to increase one's potentiality, one's capacity, one's potentiality and one's capacity. And what is the meaning of progressing? Progressing, mother says, to progress is to make constantly more perfect the capacities one already possesses. So I have understood youth in this way. But then who is old? Who is old? Who is old? Mother says old age does not come from a great number of years. Old age does not come from a great number of years. Then from where it comes? Mother says, but from the incapacity. But from the incapacity or refusal. Incapacity or refusal to continue to grow and progress. So incapacity to, when you will develop incapacity to grow and progress, then you are growing old. And when you have the capacity to grow and progress, you are youth. And when does one become old? What is the circumstances? Why mother says, I have seen old of 20 years and a youth of 70 years. Mother says, as soon as one wants to settle down in life, and reap the benefits of one's past effort. মই 50খন মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰিছো. Now I want recognition. I have done enough in my life. Now I want award and reward. So the mother says, as soon as one wants to settle down in life and reap the benefits of one's past effort, then he will be growing towards oldness. Number two, as soon as one thinks that one has done what had to be done, I have done what I needed to be done, I have done everything in my life. I have nothing to do now. Then I will be growing towards oldness. And accomplish what one had to accomplish. I have accomplished everything. In short, as soon as one ceases to progress, when one ceases to progress, to advance along with the road of perfection, and is sure to fall back and becoming old. So when we will be becoming old, first one is settling down in life. Number 1 point, settling down in life. Number 2, reaping the benefits of past work. Number 3, perception to have done everything. To have done everything in my life. Number 4, perception to have accomplished all. And in short, ceasing to progress. But one has to teach even to his body, because all this is not related to numbers of years one has lived in this physical existence. We have to teach our body. What we have to teach our body, that one can also teach the body that there is almost no limit to its growth in capacities and its progress. So we have to teach our body that oldness is not related to great numbers of years one has lived in this physical existence. So incapacity to grow and progress, or refusal to grow and progress. Then let me define who is youth then. Who is youth?
So mother then says, progress is youth. Progress is youth. Progress is youth. At 100 of age, one can be young. আনকি 100 বছৰ বয়সতো এজন মানুহ যুৱক হৈ থাকিব পাৰে। মই তাৰ পিছত what is the secret of eternal youth, শাশ্বত যৌৱনৰ গোপন ৰহস্য কি, আমি 4-5টা মই সূত্ৰৰ কথা কম। কৈছে then number second definition, who is youth? To be young is to live in the future, not in the past. To be young is to live in the future. Number 2, to be young is to be always ready to give up. What I have to give up? What I am. Why I have to give up what I am? In order to what I must be. So this is the difference between what we are versus what I must be. When I will be guided by what I must be, I am young. And when I am succumb to what I am, then I am old. So to be young is to be always ready to give up what we are in order to become what we must be. What we must be. Definition number 3. We can say that youth is constant growth. And what is growth? I have already said capacity to increase potentialities and capacities. So we can say that youth is constant growth and perpetual progress. And the growth of capacities and possibilities. Growth of capacities and possibilities. Why I am so much insisting on capacities and possibilities? When I will be summarizing the Indian knowledge system. What is, after all, Indian knowledge system? Tarpisot, Sri Maya Aru koise, ami kenake briddhottoloi ami jabo paru. Kenake ami budha hou. How we become old. Because only those years that are passed uselessly make you grow old. Make you grow old. Only those years which I have passed uselessly can make me grow old. It is not the number of years you have lived that makes you grow old. You become old when you stop progressing. So progress is the key word. And when does one become old? When does one become old? Because as soon as you feel you have done what you had to do. I have done everything. Moi jibanot 100খন hospital স্থাপন কৰিছো. Now I should get Padma Shri. Then immediately I will be growing towards oldness. Number 2, as soon as you think you know what you ought to know. I have a double PhD degree. I have a triple D.Litt degree, and I know everything about mathematics. Then you will be growing towards oldness. Number 3, as soon as you want to sit and enjoy the result of your effort. Enjoy, as soon as you sit and want to sit and enjoy the result of your effort, with the feeling you have worked enough in life, then at once you become old and begin to decline. But on the contrary, when you can remain young, how you can remain young? Because when, on the contrary, you are convinced that what I know, even after even after holding master degree on mathematics, what I know about mathematics is only the starting point. It is only even less than 1% what remains to be known. So mother says, what on the contrary, you are convinced that what you know is nothing compared to all which remains to be known. All which remains to be known. And then when you feel that what you have done, I have established 50 hospitals in my life. Mother says it is only the starting point of your life. It is only the starting point. If you can think in that way, then you can remain young. So mother says, when you feel that what you have done is just the starting point of what remains to be done.
when you see the future like an attractive sun, shining with innumerable possibilities yet to be achieved, then you are young. However, many are the years you have passed upon earth, young and rich with all the realization of tomorrow. So this is the, so then if how I can remain young? So youth is progress, youth is capacity to grow and progress. And what is the meaning of growing? Growing is to increase one's potentialities and the capacities. So there are 5 points. There are 5 points. How I can remain young throughout my life, even at the age of 90. There are 5 secrets of eternal youth. Saswata Jaubanar Rahasya. Why our Honorable Prime Minister is so young? So young. Because oldness is not related to great number of years one has lived on this earth. Even at the age of 100, one can remain young. There are 5 secrets to eternal youth. And what are those? Number 1, progress has to be goal of your life. Number 1, progress has to be goal of your life. Progress. Not anything, but progress. Progress in all respects. Cultural progress, political progress, economic progress, social progress, spiritual progress, progress in every respect. Progress is the agenda of my life. Progress has to be the goal of life. Then you will remain young even at the age of 100. Number 1 secret. Number 2, insatiable thirst for progress. Eta mur trishna thakibo lagibo. Ek otipto trishna thakibo lagibo. Otipto trishna, insatiable thirst for progress. Number 3, conviction of limitless possibility of progress. That progress is infinite, progress is limitless. I must have the conviction that progress is limitless. Progress is limitless. And number 4, constant rebirth into a new life. And what is the meaning of constant rebirth? What is the meaning? As I have already told, so I have to give up what I am in order to what I must be. So the game is between what I am and what I can be. মই এইখিনিতে মই এটা বংগদেশৰ এজন ভক্ত কবি আছে, তেওঁৰ মই এখাৰী কবিতা মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো। তেওঁ বাংলাত লিখিছিল ৰামপ্ৰসাদ সেন। কৈছে এমন মানৱ জমিন ৰইল পতিত আবাদ করলে সোনা ফলতো। এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফোনা চলতো। এনেহেন মানব পথার পরিরল সন সহুয়া হলে ফুনগুটি উলাল হেতেন ফুটি। হোয়াট আই ক্যান বিকাম eternally young. One is eternally young. মই এইভাবে কৈছো বিরাজ করিছে আর তার যদি ক্রেডিট যাব লাগে। Your teachers we forget after graduation, and teachers will keep It is the young who must be the builders of the new world. It is the young who must be the builders of the new world. But what type of young we need? The question remains, what type of youth?
Then Maharishi says, not those youths, not those who accept the competitive individualism. Number one. Number two, the capitalism or the materialistic communism of the West as the India's future ideal. So Maharishi says these three are not India's future ideal. What are those three ideal? Competitive individualism. These are all Western ideal. Competitive individual, number one. Number two, capitalism. And number three, the materialistic communism. So Maharishi says, not those who accept the competitive individualism, the capitalism, or the materialistic communism of the West as India's future ideal. Nor those who are enslaved. Enslaved to what? Not those who are enslaved to all religious formula. Those young cannot rebuild nation. They cannot believe in the acceptance and transformation of life by the Spirit. Those who cannot believe. And then what type of youth we need? But all those who are free in mind, and heart, to accept the completer truth and labor for a greater ideal. They must be men who will dedicate themselves not to the past or the present, but to the future. Because we are children of the past, possessor of the present, but the creator of the future. And Maharishi says, they must be men who will dedicate themselves not to the past nor to the present, but to the future. They will need to consecrate their lives to an exceeding of their lower self, to the realization of God in themselves and in all human beings, and to a whole-minded and indefatigable labor for the nation and for the humanity. সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে, সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এক অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰাৰ বাবে যাৰ ভিতৰত শক্তি থাকিব, সাহস থাকিব, চেতনা থাকিব, তেওঁলোকৰ দ্বাৰাহে ভৱিষ্যত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মিত হ'ব পাৰে। মই এতিয়া অলপমান মোৰ বিষয় যেহেতু ক'ব দিছিল, ইউথ নলেজ এণ্ড উইজডম, মই খুব বিতংভাৱে মই নকওঁ। মই কালি আপোনালোকৰ মই 2-4টা কথাৰ প্ৰতি মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা মই প্ৰথমতে এই যে নলেজ, what is knowledge in the profounder Indian sense of the word jnana? What is knowledge? তাৰ আগতে মই এখাৰি অসমৰ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদে কোৱা এখাৰি কথালৈ মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৰূপকোঁৱৰে ওৰেতো জীৱন এটা গান গাই গৈছিল। কি গান গাই গৈছিল? কৈছে, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। পালো জানো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ? কৈছে, তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। What does it mean? তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, a journey of knowledge in our collective life. তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা, অৰ্থাৎ তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। আৰু এই কথাৰ মাজত বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ প্ৰতিধ্বনি আছে। বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ সেই প্ৰতিনিধি কি? এই যে কৈছে জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ। What does it mean? Life has to be অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতিৰ্গময়, মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময়। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল, এই আলোকৰ উৎস ক'ত? একেই বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ পৰা মই এটা কথোপকথন আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ। মই খুব যেহেতু মোক ক'ব দিছে জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা খুব তাত্ত্বিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো এই পৰিৱেশত হৃদয়ংগম কৰিব নোৱাৰিব। বৃহদাৰণ্যক উপনিষদ যদি আপোনালোকে পঢ়ে, তাত দেখিবলৈ পাব সমগ্ৰ বৃহদাৰণ্যক উপনিষদ প্ৰায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক আৰু ৰাজৰ্ষি জনকৰ মাজত কনভাৰচেশ্যন। এবাৰ ৰাজৰ্ষি জনকে যাজ্ঞবল্কক সুধিছে যে, ঋষিবৰ, আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমি ক'ৰ পৰা লাইট পাওঁ, পোহৰ পাওঁ?
এই যে আমাক বৃহদাৰণ্যক উপনিষদে ক'লে অসতু মা সদ্গময় তমসু মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময় যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে কিয় আমি সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ পাওঁ বাট ৰাজৰ্ষি জনক ইজ নট ছেটিছফাইড ৰাজৰ্ষি জনকে কৈছে যে ইয়েছ ইউ আৰ কাৰেক্ট কিন্তু যেতিয়া সূৰ্য নাথাকিব তেতিয়া ক'ৰ পৰা পোহৰ পাম আমি তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই ততালৈকে উত্তৰ দিছে দেন ফ্ৰম মুন তেতিয়া আমি চন্দ্ৰৰ পৰা পোহৰ পাম But Rajarki Janak is not quite satisfied. Rajarki Janake আকৌ সুধিছে যদি চন্দ্ৰও নাথাকে সূৰ্যও নাথাকে তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া যাজ্ঞবল্ক্যই সেইবাৰ উত্তৰ দিছে দেন ফ্ৰম বিদ্যুৎ ফ্ৰম ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ৰম বিদ্যুৎ যদি সূৰ্য নাথাকে চন্দ্ৰ নাথাকে তেতিয়া আমি ক'ৰ পৰা পোহৰ পাম দেন ফ্ৰম বিদ্যুৎ আৰু তাৰ পিছত ৰাজৰ্ষি জনক এইবাৰো সন্তুষ্ট হোৱা নাই ৰাজৰ্ষি জনকে কৈছে যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে বিদ্যুৎও নাথাকে তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম এইবাৰ যাজ্ঞবল্ক্যই কৈছে যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে আৰু যদি বিদ্যুৎও নাথাকে তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া আমি পোহৰ কৈছে তেতিয়া আমি পোহৰ পাম ফ্ৰম বাক ফ্ৰম স্পীচ ফ্ৰম ৱৰ্ডছ আপোনালোকে কল্পনা কৰক এটা অন্ধকাৰ ৰুমৰ ভিতৰত আপুনি এখন কিতাপ এখন টেবুলৰ ওপৰত থৈ গৈছিল তাৰ পিছত আহি আপুনি টেবুলখন বিচাৰি পোৱা নাই যেতিয়া আন এজনে ক'ব নহয় মই টেবুলখন দক্ষিণ কোণত ৰাখিছোঁ আপুনি লগে লগে পোহৰ পালে দ্যাট মিন্স ফ্ৰম স্পীচ কিন্তু ৰাজৰ্ষি জনক এইবাৰো সন্তুষ্ট নহয় ৰাজৰ্ষি জনকে ক'লে যে ঋষিবৰ যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে বিদ্যুৎও নাথাকে আৰু যদি স্পীচও নাথাকে যদি বাকো নাথাকে তেতিয়া আমি আলোকৰ সন্ধান ক'ত পাম তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া ঋষিয়ে উত্তৰ দিছে দেন ফ্ৰম ইয়ৰ ওন সোল তোমাৰ নিজৰ আত্মাৰ পৰা পাবা তাৰ পিছত কিন্তু ৰাজৰ্ষি জনকে প্ৰশ্ন কৰিব পৰা নাই যদি আত্মাও নাথাকে তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম কাৰণ তেতিয়া because man just cannot exist without soul মই এতিয়া মাত্ৰ দুটা কথা কৈ মই শেষ কৰিব খুজিছো এই যে আমি আজি যোৱা এক দশকৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম যদি আমাক কোনোবাই সোধে what is precisely meant by Indian knowledge system যদি আমাক কোনোবাই বিদেশত গলে যদি আমাক সোধে what would be my answer মই একেবাৰে তাক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ কিন্তু এই যে কৈছে যে মই যে বাৰে বাৰে কৈছো youth is capacity to grow and progress and what is the meaning of growing is to increase one's potentialities and the capacities ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীয়ে সেই কথা নিজৰ জ্ঞান প্ৰণালীৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নে কৰা নাই ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বুলি ক'লে we mean three distinct things three elements three characteristics of Indian knowledge system specific and there are also three elements in modern educational system মই কেৱল মাত্ৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ মই কন্ট্ৰাষ্টটো বুজাই দিম তাতেই জ্ঞান in the profounder Indian sense of knowledge মই ঠিক সেই ধৰণে মই খামৰণি মাৰিব খুজিছো modern education system is consisting of three elements number 1 mastery over subject number second introduction to tangible object and the third thing is cultivation of faculties which is a step towards right direction so these are the three things though the third element is not accepted by all the knowledge society but still there are some section which has accepted this third element cultivation of faculties is one of the major element of modern educational system so there are three things mastery over subject number 2 introduction to tangible object and number 3 cultivation of faculties but cultivation of faculties is a right step towards the real goal of education and ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ what are the three things আমি যেতিয়া আমাক কোনোবাই সুধিব যে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালী বা ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম
তাৰ তিনিটা তত্ত্ব কি আছে কিয় মই বাৰে বাৰে কেপাচিটিজ এণ্ড পটেনচিয়েলিটিজৰ কথা কৈছোঁ বিবেকানন্দই কৈছে হোৱাট ইজ এডুকেশ্যন এডুকেশ্যন ইজ নট ইনফৰমেশ্যন এডুকেশ্যন ইজ নট একুৱাৰিং অফ নলেজ ফ্ৰম আউটছাইড কাৰণ মই ইতিমধ্যেই ক'লো নলেজ ক'ত আছে আমাৰ আত্মাৰ ভিতৰত আছে নলেজ ক'ত আছে আমাৰ আত্মাৰ ভিতৰত আছে আমাৰ আত্মাৰ ভিতৰত আছে তেনেহ'লে যদি আমাক কোনোবাই সোধে what are the three elements of India's knowledge system and which has taken care of all things যিটো আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাই বুজি নাপায় প্ৰথম যিটো এলিমেন্ট ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ not the mastery of subject but what is the methodized organization of life towards its fulfillment methodized organization of life towards its fulfillment life has to be asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityurma amritam gamaya there are other elements associated with these characteristics but basically first element is life methodized organization of life towards its fulfillment number second vast and astonishing fund of integral knowledge I am using the word integral knowledge, not the mastery of subject, but the integral knowledge. What does it mean? Integral knowledge means three things. Specifically, knowledge of the matter, that is to say, knowledge of the whole world. Physics, chemistry, mathematics, biology, political science, economics. Knowledge of the matter, knowledge of the world. But this is only one element of the integral knowledge. And what is the second element? Knowledge of the self. Knowledge of the self, karon atmar majote সমগ্ৰ জ্ঞানৰ উৎস. And what is the third element of the integral knowledge? Knowledge of the ultimate reality. Knowledge of the ultimate reality. So this is what is called integral knowledge. Knowledge of the world, knowledge of the matter. Number two, knowledge of the world, knowledge of the matter. Number second, knowledge of the self and knowledge of the ultimate reality. And what is the third element? Expression of the powers and potentialities latent within the being. Expression of the latent powers and potentialities within being. So Bharatiya Gyan Pranaliye ei tinita bosture take care kore. So first, methodized organization of life towards its fulfillment. Number second, vast and astonishing fund of integral knowledge, not only the mastery of subject. And number three, expression of the perfection and potentialities latent within being. And সেইভাবে বিবেকানন্দই কৈছে, what is education? Education is the manifestation of perfection already in man. আৰু সেইভাবে আমি কৈছো যে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীয়ে আমাৰ অন্তৰ্নিহিত সামৰ্থ্য কাৰণ আমাক বৰ্তমানৰ সমাজ ব্যৱস্থাই আমাক পৰনিৰ্ভৰশীল কৰিবলৈ বিচাৰিছে ইয়াত সম্বিত পাত্ৰা মহোদয়ে কৈ গৈছে we have to be self reliant but what is the technology মোৰ ভিতৰৰ অন্তৰ্নিহিত সামৰ্থ্য যেতিয়ালৈ মই অভিব্যক্ত নকৰিম তেতিয়ালৈ I have to be rely on others আৰু সেইভাবে ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীয়ে এই তিনিটা বস্তুকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিল মই শেষত পুনৰ ইন্টেলেকচুৱেল ফৰাম অফ নৰ্থ ইষ্টক ধন্যবাদ দিছো আমাৰ দৰে অভাজনক আহি এইখিনি কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে যদিও বিষয়টো বিৰাট বিশাল ইমান এটা বিশাল বিষয়ৰ ওপৰত ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত সকলো কথা কোৱাটো সম্ভৱ নহয় মই পুনৰ আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ Thank you very much, sir. Janga sarnisim जोङो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय सारा जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि जोहोलावजोफोरनि सोमोन्दै जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय आरो बायदि जेंनाफोरखौ सुस्रांलांनायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिबाय बेनि थाखाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो दा जोंनि बे सेसननि क्वेश्चन एन्सार दङमोन बेनि जायगायाव जोङो क्वेश्चन एन्सारखौ जोबनाय सेसनाव लांनोसै आरो बे सेसननि कनक्लुडिं रिमार्कखौ होनो थाखाय जोंनिनो मानाव गेदेर श्री उरखाव गोरा ब्रह्म सारखौहाय
आङो कनक्लुडिं रिमार्क्स होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। Respected guest speakers and intellectual gathering, আজি দুজন স্পিকাৰৰ পৰা যিখিনি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বহুত এৰিয়া কভাৰ কৰি পেলাই মই ভাবোঁ এইটো আপোনালোকে হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰিছে। एने जेसेबां रायलायनाय जाबाय नोंथांमोना गोसोआव दं जागोन एसे आगोलाव फोसावनाय बायदि जायफोरा कुइसन खालामनो गोसो बिसोर कुइसनखौ प्रिपेयार खालामनानै ला आरो नेक्स्ट सेसना जोबनाय लोगो लोगो टटेल कम्बाइन बयनिबो कुइसन खालामनो सुबिदा होनाय जागोन। तारमाने सबे कारोबार যদি प्रश्न আছে प्रश्नটো रेडी কৰি ৰাখিব লাগে আৰু নেক্সটত এটা সেশন হ'ব এই সেশন শেষ হোৱাৰ পিছত সবকে प्रश्नটো সুধিবলৈ সুযোগ দিয়া হ'ব। So after having heard this valuable speech from the two speakers, today's message, the message of this session is very clear that youths should develop that mindset to be job creator, not the job seeker. कमर साहब ने वही बोला कि जॉब क्रिएटर हो जाओ, जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी जितना यूथ होता है देश में एक माइंडसेट बना लिया कि जॉब तो सरकार देता है, दूसरा और तो दे नहीं सकता। लेकिन ये बदल गया। आज के ज़माने में यहाँ नागरिक जो है सरकार से जितना उम्मीद रखता है इससे बहुत गुना ज़्यादा सरकार को देते हैं, देश को देते हैं। वही माइंडसेट हमको डेवलप करना है। और हमारे दिगंत विश्वकर्मा डांगरियाय আমাক বহুতখিনি স্পিৰিচুৱেল সাইড বা মৰেল পইণ্ট অফ ভিউ বহুতখিনি ডিছকাশ্যন আহিলে আৰু নলেজটো সম্পৰ্কে যিখিনি ভাষণ ৰাখিছে তো ইয়াৰ দ্বাৰাও আমি বহুতখিনি কথা জানিব পাইছোঁ যে তেখেতৰ পৰা এটা মেছেজটো ক্লিয়াৰ হ'ল যে শ্বেয়াৰিং অফ দি নলেজ, কাৰণ যেতিয়ালৈকে নলেজটো শ্বেয়াৰ নহয় তে আপুনি নিজৰ এৰিয়াটো মাষ্টাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আনৰ বিষয়ে নাজানিলে নলেজো কেতিয়াবা পাৰফেক্ট নহয় যেতিয়ালৈকে এটা কম্পেৰেটিভ ষ্টাডি নহয়। এইটো তো এইকাৰণে আজি এই দুটা মেছেজ লৈয়ে আজি সেশনটো সামৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে আপোনালোকে মোক যেনেকৈ কোঅপাৰেশ্যন দিছে মিটিংটো কণ্ডাক্ট কৰাত তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। और दो जो की स्पीकर्स ऑफ दिस सेशन आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको आपके ज्ञान आपकी सोच विचार को गैदरिंग जितना भी लोग आया है इधर सबके साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। We thank the chair of this plenary session, Sri Kokrajhar Brahma sir, for giving us the concluding remarks of this very, very valuable session today. Now there is an announcement that we will have a lunch break of half an hour. Those of you who have finished lunch can be seated here in the hall, and we will have our mesmerizing cultural troops perform their presentations before us. And in the meantime, those of you who are yet to have lunch can go and complete having your lunch and come back to the session. Before that, may I request our respected MLA of Kokrajhar, Sri Lawrence Islari sir, to kindly propose the vote of thanks. खुलुमबाय, नमस्कार। कोकराझार की Y20 टॉक सीरीज की सम्मानीय
मुख्य अतिथि श्री अशोक सिंघाल जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ असम, और इस सेशन की चेयरपर्सन असम की कैबिनेट मिनिस्टर श्री उर्खाउगरा ब्रह्म, हमारे बीटीआर का चीफ प्रमोद बोरो जी, इस सेशन की स्पीकर सम्मानीय श्री उल्लास कम्मार जी, स्पीकर श्री दिगंत विश्व शर्मा जी, और यहाँ आए हुए हमारे मेहमानों और जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विभिन्न प्रांत से आए हुए हमारे मित्र युवकगण, समय बीत गया इस सेशन का, इसीलिए मेरा भी एक टीम था यूथ एंड वर्किंग कल्चर, लेकिन इस सेशन का समय बीत गया। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की एमएलए होने के नाते मैं सिर्फ धन्यवाद की बात रखना चाहता हूं। हमारे देश जो अभी G20 और Y20 को लेकर जैसे हमारे देश में बात रखते हैं, बात करते हैं, और ऐसा सिलसिला जारी है जहां पर जात पात, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बहुत सा बात रखते हैं हमारे देश में। ऐसा हमारा एक अनुभव है, लेकिन इसमें कहा गया है वसुदेव कुटुंब, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वाकई में एक झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो जो विशेष रूप से ये Y20 में जिन बात को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ मैं एक लाइन बोलना चाह रहा हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, दुनिया की किसी भी देश में ऐसा रिसोर्स नहीं है जो भारत में है। क्या है ये? यूथ रिसोर्स। 65% यूथ हमारे देश में है और ये सबसे बड़ा एक रिसोर्स है। कहा गया इसीलिए यंग पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज एजेंट ऑफ चेंज। हमारा जो युवा पीढ़ी है वो लोग को परिवर्तन यानी चेंज की एजेंट बोला गया है, एजेंट माना गया है। हमारे मित्रों, अगर हम चाहे तो हम चेंज ला सकते हैं। हमारे क्षेत्र में चेंज ला सकते हैं, हमारे स्टेट में चेंज ला सकता है, हमारा देश में हम लोग चेंज ला सकते हैं। तो इस वक्त में हमारे आज की ये जो कोकराझार की जो Y20 प्रोग्राम में हिस्सा लिए हुए सारे मेहमान और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑर्गेनाइजर, सभी को धन्यवाद रखते हुए मेरे वोट ऑफ थैंक्स को मैं ही विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your vote of thanks. Now we have formally closed this plenary session. I once again thank all of you for your patient listening and our respected speakers and dignitaries on the dais for the very valuable session. Thank you, sir. जोंनिया प्रोग्रामा सोलिबाय थासिगोन। जुदियो जोङो समायाव एसे एडभान्स जानानै थांदोंब्लाबो जोङो जोंनि थामथि सेसन, बियो वेलडिक्टरी सेसन, बियो 3 बाजियाव जानो गोनां आरो बेखौ जोङो 3 बाजियावनो जोङो जागायजेनफिनगोन। दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां मेहेरगोनां कालचारेल आर्टिस्टफोर दंफैयो। दानो गिबि गिबियावहाय जोंनि मानाव गेदेर डक्टर गोमोथाव बसुमतारी आदाखौहाय गावनि सेरजानि दारै जोंनि बे
auditoriumaव सफैनो हानाय साफ्रोमबोनि सिगाङाव मिलौदो देंखो बोनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। আমাৰ এতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেক যদিও হৈ আছে, আমাৰ বিভিন্ন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামবিলাক চলি থাকিব। সো প্ৰথমতে মই আমাৰ মাজত আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ গমথাও বসুমতাৰী দাদা, এখেতৰ সেৰজা আমাৰ মাজত পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ। যিবিলাকে লাঞ্চ কৰা হোৱা নাই, অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে গৈ পিনি লাঞ্চটো কৰি আহক। এণ্ড আমি আমাৰ ভেলডিক্টৰী সেশন যেহেতু 3টা বজাত আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে, সেইটো আমি 3টা বজা ৰাইট টাইমত আমি আৰম্ভ কৰিম। And in the meantime, may I request the in-charges of different teams coming from colleges and university and institutes to kindly engage with your teams and ensure that everybody in your team is present on time for the valedictory session to start at 3 p.m. today. Thank you.